And we have more news coming in. The NIA called a big meeting to take strict action against Khalistani activities, terrorist activities and gangsters. Meeting called in Delhi on the 5th and 6th of October. A meeting of ATS chiefs from across the country has been called. In this meeting, a strategy is going to be made to take action against the Khalistani terrorists and gangster nexus who are operating from foreign soil, because that is a huge concern. Arvind Oja continues to be with us. Arvind, भारत के बाहर फॉरेन सॉइल में जो एक्टिविटीज कैरी ऑन हो रही हैं कनाडा में पाकिस्तान के असिस्टेंस से, इस पर नजर रहेगी एनआईए चीफ की, आईबी चीफ, रॉ चीफ और हेड्स ऑफ एटीएसएस की, जो कि इस मीटिंग में शामिल होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो गैंगस्टर और टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ है हाल फिलहाल में, चाहे वो एनआईए हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, और तमाम स्टेट की एजेंसीज ने इस बात का खुलासा किया कि किस तरीके से जो गैंगस्टर हैं वो अब आईएसआई और खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर एक नया गठजोड़, एक नेक्सस बना चुके हैं। उसके बाद हाल फिलहाल में जिस तरह से कनाडा में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद एनआईए ने तमाम जो स्टेट की एंटी टेरर यूनिट है उनके ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई है, जो 5 से 6 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में ये कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा होगी कि जो फॉरेन कंट्री में, चाहे वो कनाडा हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा जाए। अभी देखा होगा आपने, जो गुरपंतबंद सिंह पन्नू है, सिख फॉर जस्टिस का चीफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसकी जो प्रॉपर्टी है अमृतसर में, पंजाब में कई जगहों पर वो सीज की गई है। और एनआईए अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी से अगर कोई एक्शन लेना चाहती है इन टेररिस्ट पर, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, वेस्टर्न यूपी में हो, यहाँ पर जो गैंगस्टर हैं जिनके कनेक्शन खालिस्तानी टेररिस्ट और आईएसआई से है, उन पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्टेट पुलिस है, स्टेट की एंटी टेरर यूनिट है, वो एनआईए के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करे, ताकि जो ये टेररिस्ट है इन पर शिकंजा कसा जा सके। इस वजह से ये क्रूशियल मीटिंग बुलाई गई है। 5 से 6 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी, जिसमें डीजी एनआईए, आईजी एनआईए, जो अदर स्टेट के, चाहे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के, या फिर पंजाब के जो एंटी टेरर यूनिट है, ये तमाम जो यूनिट्स हैं वो एक साथ होंगी और एक साथ मिलकर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्लानिंग है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए और इंडिया में टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन पर कैसे शिकंजा कसा जा सके। जी, बने रहिए हमारे साथ। Arvind getting us all of those details as far as this big development is concerned vis-a-vis the NIA now chairing a meeting on these terrorists and these gangsters associated with the Khalistani movement. Big terror glare on Arsh Dalla in Canada. In a sensational twist, India Today has accessed Delhi police charge sheet against the wanted Khalistani gangster Arshdeep Singh, also known as Arsh Dalla. This revelation sheds light on this man, Arsh Dalla, and Harshdeep Nijjar's ISI and Lashkar connections as well. The charge sheet has revealed that RSS and Shiv Sena netas, Hindu seers, were on target. There was a pre-murder terror recce also done for Sena leaders. Also, Lashkar connections behind the 2023 Delhi targeted murder. Arsh Dalla, along with Lashkar, got Rajkumar murdered in Delhi by slitting his throat. In the photo, Jagjit and Naushad can be seen slitting his throat. The video of their killing was then sent to Arsh Dalla. We're getting in all details as far as this particular nexus is concerned. Remember, it's ISI and Khalistanis working together. Make no mistake. This is the ISI Lashkar link as well. Look at how this nexus really operates. ISI and the Lashkar, in fact, work together to give further boost to this Khalistani movement. This is undoubtedly a lost cause here in India, but of course is finding credence in Canada. Arsh Dalla, the man that we are talking about, was the man that agencies are after, has worked along with Nijjar, Khalistani terrorist who is in fact in Canada. This is the man, in fact, on your screens, Arsh Dalla, a Khalistani terrorist who works and functions, lives in Canada. He is connected to 2 other terrorists, Naushad and Jagjit, who are the Khalistani terrorists in Delhi. Rajkumar was the victim in this case, where his throat was slit. This video was first then made and then sent to Arsh Dalla. This is the victim. In fact, this particular video that was sent by Naushad and Jagjit to
Arsh Dalla. Getting in details of the ISI Khalistan nexus, of course, this getting a big boost from Pakistan as well. Khalistanis, all of these, in fact, these Khalistani terrorists who are under the radar work along with the ISI. And that work essentially continues to foment trouble in Canada, targeting Hindus in Canada and also, in fact, in India. The details are as follows of Arsh Dalla, as far as this man under the radar of the NIA is concerned. As far as the assassination of Sukhdool in Winnipeg in Canada is concerned, Arsh Dalla was in fact the man who was under the radar of the agencies. Sukhdool was in fact gunned down by the authorities who went after this terrorist in Winnipeg in Canada. We put out those pictures as well. But before that, this nexus that we are talking about as far as his association with terrorists in Delhi, Naushad and Jagjit is concerned, who in fact split the throat of one Rajkumar. The idea was to foment trouble and lead and create tensions in Delhi city. Naushad and Jagjit are Khalistani terrorists who are operating out of Delhi. And the boss, of course, is Arsh Dalla. Rajkumar was the victim in this case where the throat was slit and the video was sent to Arsh Dalla. Jitendra is getting us more details on that. Jitendra, all of this essentially was done to stoke trouble, to foment trouble here in Delhi as well. The idea was to stoke communal tensions in Delhi, isn't it? Jitendra. देखिए, यहाँ पर एनआईए की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि किस तरीके से जो एटीएस चीफ हैं, उन एटीएस चीफ के जरिए जो अलग अलग राज्यों में खालिस्तानी एक्टिविटीज के साथ साथ जो गैंगस्टर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उन गैंगस्टर एक्टिविटीज को कैसे रोकना है, उसको लेकर के ये बड़ी बैठक 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता एनआईए की तरफ से किया जाएगा। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इस बैठक में आईबी चीफ, रॉ चीफ के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो एटीएस चीफ हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जो आतंकी गतिविधियां, खालिस्तानी एक्टिविटीज पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए राज्यों की एटीएस टीम से मदद ली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि 19 लोगों की जो लिस्ट एनआईए ने जारी किया है, जो कि विदेशों में रह करके भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इस वक्त फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए की टीम करने जा रही है और उनकी संपत्तियां जो अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, उनको जब्त करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो एनआईए लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो खालिस्तानी एक्टिविटीज हैं और जो गैंगस्टर एक्टिविटीज हैं उस पर लगाम लगाया जाए और इसके लिए कड़े कदम राज्यों के साथ मिलकर ही उठाया जा सकता है। यही वजह है कि 5 और 6 अक्टूबर को राज्यों के जो एटीएस प्रमुख हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बिग क्रैकडाउन ऑन खालिस्तानी टेररिस्ट in India as well, like we've seen as the recent actions of the NIA is also in fact confirmed. And what Jitendra is telling us about is the important meeting that is being called to discuss the way forward on how these terrorists can be cracked down upon. Many of them, of course, are working and functioning from outside of India, especially in places like Canada. Jitendra, I'm going to thank you for the moment for getting us those details.